Hello children, good morning. Children will be writing the Hindi notes today of 5th lesson. Chalak Bandar, the clever monkey. So every one of you all open Hindi class work. Whatever we are going to write, you need to write twice in the class work, twice in the homework. So children, here one important thing I just wanted to tell you all, that in Hindi, English or whatever, you need to read only the lesson related question answers. Poem related, you will not be having any meanings or question answer or opposites. Okay, poems you will be having only poem. That means only oral will be conducting the poem, and related to that poems you will not be having any question answers or any object. Okay, now let's start. First one, Roman 1, put row date, part 5, Chalak Bandar on the pink line. Roman 1, Kathin Shabd. That means spell words. First one, burger. Burger. Burger means banyan. Next, chalak. Clever. Chalak. Champu. Cham. कामेरू की मात्रा पू, चंपू. नेक्स्ट, बिल्लिया. बामेई की मात्रा बी, आधा ला पूरा ला, लामेई की मात्रा ली. बिल्ली या में चंद्रबिंदु. When there is a plural form, we have to put as आ की मात्रा and चंद्रबिंदु. बिल्लिया. Next, पूसी. Name of one of the cat. पामेरू की मात्रा पू, सामेई की मात्रा सी, पूसी. नेक्स्ट, कबरी. रामे ई की मात्रा री, कबरी. नेक्स्ट, छीन कर. छामे ई की मात्रा छी, न कर, छीन कर. It means snatching. नेक्स्ट, झगड़ा. डा में आ की मात्रा डा, झगड़ा. That means quarrel or fight. बांट कर. बा में आ की मात्रा बा, चंद्रबिंदु. बांट कर, बांट कर. Divide or breaking it into two pieces. बांट कर. Next one, तराजू. रा में आ की मात्रा रा, जा में ऊ की मात्रा जू, तराजू. Sir, balance, common balance. 11th one, कटवारा. ब चंद्रबिंदु, त वा में आ की मात्रा वा, रा में आ की मात्रा रा. बंटवारा, division. Who will divide? Next one, टुकड़ा. ता में ऊ की मात्रा टू, क डा में आ की मात्रा डा, टुकड़ा. नेक्स्ट, पलड़ा. प ल डा में आ की मात्रा डा, पलड़ा. नेक्स्ट, चक्कर. च आधा का पूरा का, चक्कर, चक्कर. नेक्स्ट, धूर्त. दा में ऊ की मात्रा धू, आधा रा ता, धूर्त. धूर्त means you, how dare you will scold, no, you stupid, you idiot, like that. We should never use this kind of words, but here in the lesson the cats are fighting in that manner. So we finished 15 spell words. That means the 15 कठिन शब्द हम लोगों ने लिखे हैं. 2 बार आपको क्लास वर्क में लिखना है और 2 बार होमवर्क. Now शब्दार्थ. शब्दार्थ you have in the page number 30. From there you can write. Here you have. Okay, page number 30. Roman number 2, शब्दार्थ. First
First one, gaon, village. What is meant by gaon? Village. Gaon, village. Burger, burger. Banyan tree, B-A-N-Y-A-N, banyan tree, T-R-E-E, tree, banyan tree. Third one, pear, tree. Fourth one, bandar, monkey. Fifth one, chala, clever. Chala, clever. Now, sixth one, dal, branch. Dal, branch. झगड़ना, to quarrel. यहाँ में आगे मात्रा ना. झगड़ना, to quarrel or to fight. Q-U-A-R-R-E-L, quarrel. Next, eighth one, roti, chapati. रोटी, चपाती. भाग गई, to run away. भाग गई, ran. Okay, भाग गई means what? Ran. 10th one, झूठ, lie. झूठ, lie. Lie means what, children? Talking untruth things are known as lies. मुंह तोड़ना, मुंह means face. मुंह तोड़ना, तामेओ की मात्रा तोड़ना. मुंह तोड़ना, to beat. So these cats are fighting with each other. That one of the cat was telling, right? I'm going to break your face or break your mouth. Now 12th one, barabar. Barabar. See, he gave two. You need to write only one. Barabar, equal. Third one, so 13th one, बांटना. बांटना, to distribute. To distribute, D-I-S-T-R-I-B-U-T, distribute. 14th one, Raji. Raji means agree. Agree. 15th one, तराजू. तराजू, balance. one, खाना, to eat. खाना, to eat. 17th one, धूर्त, cunning. धूर्त, cunning. 18th one, लाभ. लाभ, benefit. Okay, children. So there are about 80 meanings which has to be written twice in classwork and twice in the homework. Next, third one is Paryayavachi Shabd. Means these words will be having the same meanings. Same meaning. The words will be different, but meaning
is already given in the textbook. From there only you need to write. Practice writing here. See, practice writing here in page number 30 as well as 31. Here, these two. Roman number 3. पर्याय वाची शब्द. First one. Gram. Gram. Gram is also known as gram. gram में र will become gram. gram में आगे मात्रा ग्राम. ग्राम. गांव. gram is known as village. Okay, in English you write it here. Or else you don't need to write. पेड़ वृक्ष. व में रू की मात्रा वृक्ष. वृक्ष. पेड़ वृक्ष. Now चालाक. चालाक. चतुर. चालाक चतुर. Fourth one बंदर वानर. बंदर are monkeys are known as बंदर as well as वानर. Next झगड़ा. 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 लड़ाई. लड़ाई. झगड़ा. लड़ाई. There are total 8. Again I am telling children, after writing in class of homework you need to write it in the textbook as well. झूठ. असत्य. असत्य. झूठ. असत्य. Seventh one रोटी. चपाती. चपाती also roti also known as chapati in Hindi as well as English. लाभ. फायदा. फायदा. लाभ. फायदा. Okay children, once again I will be reading. गांव ग्राम. पेड़ वृक्ष. चालाक चतुर. बंदर वानर. झगड़ा लड़ाई. झूठ असत्य. रोटी चपाती. लाभ फायदा. So we have written 3 Romans. In the next video I'll be taking, no, here only we'll be writing. There are some one word answers only, one line answers, so we'll be writing here only. Then textbook part. Okay children, every one of you all open textbook. After writing the answers here, then you copy down in the classwork twice and homework once. Practice it. After writing here one time, practice in the classwork as well as homework. So this will be Roman 4. When you are writing it in the classwork, then it will be Roman 4. Prashna Uttar. While writing in the, see, you need to write like this. Roman number 4. Prashna और उत्तर. ठीक है, ऐसा लिखना. प्रश्न मीन्स क्या है? क्वेश्चन और उत्तर एंड आंसर. सो उत्तर एक. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? वी ऑलरेडी गिव द आंसर. बंदर कहाँ रहता था? वेयर डज द मंकी यूज्ड टू लिव? बंदर बरगद के पेड़ पर रहता था. सो ही गिव फर्स्ट आंसर. नाउ बंदर का नाम क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मंकी? चंपू. बंदर का नाम चंपू था. बंदर का नाम चंपू था. क्या नाम था बंदर का? चंपू. नाउ प्रश्न 3. देखो क्या है प्रश्न 3. बिल्लियों के नाम क्या थे? व्हाट वर द नेम्स ऑफ द
कबरी थे। क्या नाम थे? पूसी और कबरी। तो नाउ क्वेश्चन 4, प्रश्न 4, बंदर क्या खाना चाहता था? What was in the mind of the monkey? What monkey was planning to eat? Monkey was planning to eat the chapati which the cats were fighting. बंदर रोटी खाना चाहता था। बंदर रोटी खाना चाहता था। क्या चाहता था? क्या खाना चाहता था? बंदर रोटी खाना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट वन। दो के झगड़े का लाभ कौन उठाता है? When two people are fighting, so who will be benefiting? Who will be getting the benefit? Always the third guy. दो के झगड़े का लाभ तीसरा उठाता है। उत्तर 5, दो के झगड़े का लाभ तीसरा उठाता है। बोलो, दो के झगड़े का लाभ तीसरा उठाता है। We'll read the answers once again. बंदर कहाँ रहता था? बंदर बरगद के पेड़ पर रहता था। Not only these 4, you need to write the first one as well. In the classwork and homework I am talking about. बंदर का नाम क्या? बंदर का क्या नाम था? बंदर का नाम चंपू था। से बंदर का नाम चंपू था। बिल्लियों के नाम क्या थे? बिल्लियों के नाम पूसी और कबरी थे। बिल्लियों के नाम पूसी और कबरी थे। नेक्स्ट वन, बंदर क्या खाना चाहता था? बंदर रोटी खाना चाहता था। नेक्स्ट, दो के झगड़े का लाभ कौन उठाता है? दो के झगड़े का लाभ तीसरा उठाता है। Okay children, then in next video we will be writing the textbook part. Okay children, bye bye.